आज के लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन पैराबोला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 29। तो ये सेट है दैट एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन सेट ए के अंदर है। तो इसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स, ड्राइव सेट, विच मीन लिमिट पॉइंट्स, क्लोजर, सारे हम सेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि अभी हम करते चले आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम बात करेंगे सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको लेकर हम कोई भी ओपन डिस्क नहीं बना सकते जो कि उस सेट के अंदर टोटली कंटेन्ड हो। तो इट मीन्स दैट जो इंटीरियर है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू empty set. There is no point in the interior point. Next, every point will be the limit point. It means a dash is just equal to the same as the points on the parabola. So this is y is equals to x square and this implies equals to a. And next we talk about the closure. We know that a closure is just equal to a union a dash, and that implies a again. And the fourth is isolated point. So there is no point in this set which is not a limit point. This is an empty. Okay. So next we talk about the properties. So you have to understand, since a interior is not equals to a, this implies not open. तो इसका मतलब ये सेट ओपन नहीं है। Since a dash is the subset of a, this implies a is closed. Uh, since this x and y is tending to infinity, so this implies not bounded. तो ये सेट हमारे पास बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है तो इट इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट भी नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डेंस। तो सिंस दिस इज ए क्लोजर is not equals to whole R2, so this implies not dense। इससे हमारा डेंस भी नहीं है। ठीक है, तो दीज आर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैराबोला, है ना, पैराबोला से रिलेटेड है। तो नॉट डेंस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, और क्या हमें देखना है, path connected, connected, convex। Okay, so clearly it is a path connected, it is a path connected, है ना, और path connected है, this implies connected but not convex। कॉन्वेक्स बिकॉज अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स, ये हमारे पास पैराबोला के पॉइंट्स, इनको हम मिलाए स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट है, इट मींस इट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। ओके, एंड आफ्टर कॉन्वेक्स वी हैव टू नो अबाउट द परफेक्ट एंड डिस्क्रीट। तो यहाँ पर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ड्राइव सेट है, सिंस दिस इज ए डैश जस्ट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज इट इज अ परफेक्ट सेट। Clearly it is not uh, this, since isolated of A is not equals to A, this implies not this. Okay, so this is all about all answers about the set parabola. Okay, let's talk about the exterior and interior both of the parabola। parabola के outside and inside का region हम ले रहे हैं, बट पैराबोला पे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं ले रहे हैं। मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, वाई शुड नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो वाले पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं। तो let us take solution। so here this interior will be all the point because this boundary points I am excluding। तो यहाँ पर a interior will be a again with all those points other than parabola। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट के अंदर हमारे पास इस पैराबोला के भी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एज वेल एज आउट्स एंड इनसाइड के पॉइंट। तो ये बाउंड्री भी आ जाएगी, क्योंकि बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट होगा उसको बना के हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो ओपन डिस्क इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स
कंटेन की होगी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट्स. तो दिस विल बी y is not equals to x square as well as union those points on the parabola as well. So this is y is equals to x square. ठीक. And that will be your this implies you can see this is a dash is whole R2 plane. Okay. Next we talk about your closure. तो अगर हम a closure की बात करते हैं तो this is your a union a dash and that is equals to R2 again. Okay, next we talk about isolated point. So there is no isolated point, so this is empty set. So since this is a interior is just equal to a, this implies open set. This is an open set, but it is not closed. Uh, since a dash is not a subset of a, so this implies not closed. क्लोज्ड नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं बाउंडेड की. तो इट्स अनबाउंडेड clearly unbounded, not bounded. और this implies not compact. क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना जरूरी है. ओके, सिंस ए क्लोजर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए क्लोजर इज शुड बी इज इक्वल टू R2. दिस इंप्लाइज इज dense set. ओके, तो टेंस आपको पता इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड बिकॉज बिकॉज अगर हम एक इनसाइड और आउटसाइड के पॉइंट्स को हमें जाना है तो वी हैव अ बाउंड्री. ठीक है, एक वॉल की तरीके से हमारे पास पैराबोला पे जो पॉइंट्स है वो काम करेंगे. इसलिए वी विल नॉट हैव एनी कर्व विद जॉइनिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट. है ना, इनसाइड में एक पॉइंट ले लिया, आउटसाइड से मतलब एक पॉइंट एक हमने यहाँ ले लिया, दिस इज पी और दिस इज समवेयर पेंट क्यू. तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वी हैव नॉट एनी कर्व. और आप कहोगे इन्फिनिटी पे चले तो इन्फिनिटी पे ये भी तो जा रहा है, तो वी विल नॉट एबल टू गो टू पी बाय एनी कर्व. है ना, क्यू से पी पे हम नहीं जा सकते किसी भी कर्व के द्वारा. तो इसका मतलब इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड. इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड. तो आल्सो नॉट कनेक्टेड. तो नॉट पाथ कनेक्टेड, not connected. Okay, and convex भी नहीं क्योंकि connected नहीं है. तो obviously बात it is not convex. ठीक है, तो also not convex. ठीक है, perfect भी नहीं. क्यों? क्योंकि a dash is not equals to a. It implies not perfect. And since this is isophy is empty, तो हम करते चले आए. It is not equals to a. This implies not discrete. ओके, तो डिस्क्रीट भी नहीं है तुम्हारे पास. तो ये हमारे सारे रिजल्ट हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि दिस एक्स का वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब पैराबोला के जो पॉइंट्स है उन्हें हमें उनके अलावा सारे पॉइंट हमारे सेट के मेंबर्स हैं. तो नेक्स्ट हियर वी आर टेकिंग द वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर. इट मींस द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द पैराबोला. पैराबोला का जो आउटसाइड का रीजन है वो हमारे पास जो यहाँ पर हमने डॉटेड जो हमने ग्रीन कलर के डॉट्स बनाए हैं, दिस रीजन इज इन दिस सेट. ओके, तो जस्ट राइट द सॉल्यूशन. ए इंटीरियर हियर it will be all the points. So this will be all the points. Y is less than x square. It means it is a again. नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए डैश. ए डैश के अंदर बाउंड्री भी आ जाएगी, मतलब पैराबोला के भी पॉइंट्स आ जाएंगे. देन यू कैन से दिस इज एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लोजर. क्लोजर विल बी ए डैश. है ना, and next isolated points. So isolated point is empty because there is no point which is not in this set which is not a limit point. ठीक है, since a interior is just equal to a, this implies open set. So this is the open set actually.
Since this is A dash, is not a subset of A because there are extra points as the limit point, so this implies not closed. ठीक है, closed नहीं है, this is not a closed set. Next, we talk about the boundedness, so it is not bounded. This implies not compact, and since this is A closure is not equal to R2, so this implies uh, not dense. है ना, dense के लिए closure should be equal to whole R2 plane. Okay, and it is path connected. This implies connected, है ना, और इट इज नॉट कॉन्वेक्स बिकॉज अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लिया और पॉइंट यहाँ ले लिया, इनको हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा, तो दिस स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट. ओके, इट इज, तो ये कॉन्वेक्स नहीं. ठीक है, सिंस दिस इज ए डैश is not equals to A, this implies not perfect. Empty set is not equals to A, this implies not this. Okay, इस set को लेकर next talk about the this one where we are including this parabola as well, outside region as well as the parabola. Okay, तो parabola पे जो points है उनको भी हमने ले लिया है. So let's try the solution. First, तो here same, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर की, तो यहाँ पर इक्वलिटी हट जाएगी. इट मीन्स कि पैराबोले के जो पॉइंट्स है, जो बाउंड्री के पॉइंट्स है, दैट विल बी नॉट द interior point. It means y is less than x square only. But if you are going to find the limit point, so all those points will be the limit points, exterior as well as boundary points. And this A closure is again will be A. And this is 4, this is isolated points A. It just empty set. So since this is A interior is not equals to A, this implies not open. So this is not open set. But we clearly say since this is A dash is a subset of A, this implies it is closed set, not bounded. It is not bounded. हम देख पा रहे हैं clearly. So this implies not compact, है ना, compact नहीं है, और compact के बाद हमें dense देखना होता है. So since our closure is not equals to R2, since closure is not equals to R2, since A closure is not equals to R2, this implies not dense. Okay, उसके बाद हमारे पास path connected. Yes, it is path connected. We can join any 2 points by the curve within the set. So clearly it is path connected. Path connected. Path connected implies it is connected. But it is not convex. But not convex. Because सेम वही रीजन कि अगर हम दो स्ट्रेट लाइन को मिलाते हैं, दो पॉइंट्स को, तो वो हमारे पास आउटसाइड द सेट जा रही है. बट नॉट कॉन्वेक्स. But not convex. ठीक, और since A dash is just equal to A, this implies is perfect. परफेक्ट सेट, ये परफेक्ट सेट है तुम्हारे पास. अगर हम यहाँ पर डिस्क्रीट की बात करें तो नहीं है, सिंस आइसोलेटेड ऑफ ए इज ऑलवेज एम्प्टी इन सच टाइप ऑफ, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इज नॉट this. Okay, so these are the answers about this set where we are taking outside the region of the parabola and also parabola, है ना. parabola के जो पॉइंट्स है वो भी हमारे पास चेक किए नंबर. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. इसमें हमने y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर. इट मींस द रीजन इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के जो अंदर का रीजन है, जो यहाँ पर हमने डार्क करा है, उसको हमने दिया है रीजन को. तो दिस राइट हियर. तो इसमें इंटीरियर तो यही रहेगा. इंटीरियर में इसी सेट के सारे मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि वी आर नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री है. तो इट मींस ऑल दोज पॉइंट्स इनसाइड द पैराबोला विल बी द इंटीरियर पॉइंट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ड्राइव सेट. तो ड्राइव सेट के अंदर आपको बाउंड्री इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होते हैं दैट आल्सो परफॉर्म एज अ लिमिट पॉइंट. So this is y is greater or equal to x. Okay. Next we talk about the closure. So this is A closure. We know that A union of A dash, and that will be equal to A dash because it is a superset. So isolated points की अगर हम बात करें, that is your empty. So since this is A interior is just equal to A, this implies A is open, open set.
Okay, next, since this is A dash is not a subset of A, this implies not closed. Okay, and not bounded as well. It's not bounded because here this is tending to infinity है ना, ये infinity की तरफ जा रहा है, so it means not bounded, and this implies not compact. Okay, not compact, or since this A closure is not equals to whole R2 dense, this implies not dense, not dense. Okay, and we can see it is a path connected. Okay, so we can just see the path connected, path connected. This implies connected, and also कॉन्वेक्स है ना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स मिलाते हैं इन दिस सेट by the straight line, so that straight line will be lie with the set. Okay, so this is a convex set, also a convex set. Okay, and since this is a dash is not equal to it, this implies not perfect. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट चेक करने का, तो सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है which is not equal to it, this implies not good. Clear? So this is all answers about this set where we are taking the inside region of a parabola. Okay. Next यहाँ पर हमने पैराबोला का इनसाइड एज वेल एज पैराबोला को भी इंक्लूड कर लिया इस पीरियड के अंदर. So this in A interior will be the point which is not on boundary. So this is x comma y such that y is greater than x. ये वाला region जो होगा that is your interior point. Okay. नेक्स्ट ड्राइव सेट, तो ड्राइव सेट तो पूरा पूरा ए ही हो जाएगा, एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू ए. अगेन नेक्स्ट क्लोजर की अगर हम बात करते हैं, तो क्लोजर इज ए यूनियन ऑफ ए टेस्ट एंड दैट विल बी ए अगेन. एंड देन आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो दैट विल बी एम्प्टी सेट बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट इन द दिस आइसोलेटेड पॉइंट. Okay, so now since this is A interior is not equal to every point should be interior point of the set, that set is called open set, but यहाँ पर ऐसा नहीं है because जो boundary points हैं वो हमारे पास interior points नहीं, so it means it is not open. This implies not open. Since A dash is the subset of A, this implies closed set. Open नहीं है but it is closed set. Next we close के बाद में bounded देखना है, तो it is not bounded because it will be tending to up to infinity, है ना, infinity की तरफ जा रहा है ये, तो not bounded. तो closed set तो है but it not bounded, इसलिए not compact, तो compact भी नहीं है हमारे पास. और since A closure is not equals to whole R2 plane, this implies not dense, है ना, और it is path connected है ना. Clearly from figure you can just say path connected implies connected, path connected, and also convex. Okay, also convex. Since A dash is just equal to A, this implies perfect, but it is not discrete since isolated points of A is empty set is not equal to A, this implies non. Okay, so these are the answers of the अगर हमारे पास कोई भी पैराबोला है तो वी कैन सी कि हम पैराबोला ले रहे हैं, पूरा पूरा पैराबोला के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं, उनका कलेक्शन एज ए सेट है, या फिर एक्सटीरियर पॉइंट है या इंटीरियर पॉइंट्स हैं, आउटसाइड द पैराबोला रीजन है, इनसाइड द पैराबोला रीजन है, एंड इन द पैराबोला केस वी टेक एनी रीजन दैट विल बी अनबाउंडेड, है ना. सर्कल का केस था उसमें हमारे पास बाउंडेडनेस मिल जाती थी, and also in the hyperbola case we will see that type of set is also
unbounded. Okay, so these are answers uh, about the problem which is based on पैराबोला। तो पैराबोला कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे देखना है और किस तरीके से हमें आंसर करना है, वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो आप ट्राई करिए, और भी प्रॉब्लम्स अगर कहीं मिल जाती है। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पर, तो ये जो पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स है दैट इज 0, 0 है ना, एंड दिस इज सम सिंपल टाइप ऑफ पैराबोला, बट इट मे बी एनीवेयर द पैराबोला। सपोज दैट यहाँ इन्होंने कोई रीजन ले लिया, तो इसका मतलब आउटसाइड इनसाइड रीजन आप देख सकते हैं क्लियरली। कोई भी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, अभी ये इधर का हो सकता है, इधर का रीजन खुले, है ना, दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई टाइप का भी पैराबोला हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो एक हमको सिंपल आइडिया आ गया कि पैराबोला की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें कैसे करना होता है, बट वो कुछ भी किसी भी जगह पर, तो आपको सबसे पहले उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए कि उसका ज्योमेट्री क्या है, जो भी हमारा सेट। और अगर उसको ज्योमेट्री आप उसकी देख पाएंगे तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे उसके सेट के बारे में। ओके, और उसके इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में, उसके लिमिट पॉइंट्स के बारे में आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको लेक्चर्स बेनिफिशियल लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही आप सीखते रहिए मैथमेटिक्स, दैट इज very important and very useful for our mathematics journey. So, okay, thank you so much.